So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start the session. So I'll upload the PDF for today's session. Just give me a minute, okay? We will be starting this session and I will be uploading the PDF for today's session. Give me a minute. Within a minute, the video will be available. The PDF will be available to you on our Telegram group. So you can download the PDF from there. The PDF for today's session has been uploaded on our Telegram group. You can download the PDF. Okay. आप PDF डाउनलोड कर सकते हो and the PDF has been uploaded on our Telegram group. Again, I am repeating this particular point. मोहित, नीरज, पीयूष, सैयद आसिफ, राहुल, राज, करण, मुस्कान, शिवानी, Drishyani, Ashwani, Piyush, Yashwini, Nimal, Anand, Piyush. Good morning, all. So let's start the session. Let's see what exactly is there for us in today's newspaper. Sufficient number of people have already joined us. A very good morning to all. Okay, so let's see what exactly is there for us in today's newspaper. Now, it was very much expected that government has to take some serious steps regarding the newly emerging threat, that is because of Omicron risk. Okay, and center tightens the rule for overseas travelers. Now this was about to happen. Okay, it is quite understood. We have to prepare for the next trouble, next challenge, that is this Omicron risk, which is six times more potent than the delta version. Okay, so delta version covid का बहुत खतरनाक था. So this particular mutation of Omicron is 6 times more dangerous than the delta version. So we should have clarity in our mind that again the administration have to be very serious about it. Okay, because number of people infected with Omicron have already been identified in India. So यहाँ पे बेंगलुरु एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे there are people who have been like identified. Those people were carrying the Omicron corona. Okay, so the point here is that अब ये बहुत ज़्यादा तरीके से फैलेगा हमारे यहाँ पे. And what could be the existing problem with this? The major problem with this is that the our immune system might not be able to protect us against this particular virus. Okay, जो ओमनिकॉन म्यूटेशन है उससे शायद हमारा जो existing system है that might not be able to protect us. That's for sure, and that's why WHO has also said that this is the variant of concern. Okay, कि ये जो है आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है. And when WHO is saying this particular thing, it means that we have to be serious about it. Again, this is the time that the whole like people, okay, they have to start wearing mask, because I have observed that people are careless about corona now. तो काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कोरोना को लेके लोग भी अब सीरियस उतने नहीं हैं. बट दिस इज द टाइम यू हैव टू बी लाइक सीरियस अबाउट इट. ओके, सो अदर देन दैट द सेंटर इज अर्जिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फैसिलिटीज. वी नो दैट हेल्थ इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. एंड अगेन इफ यू लुक इन टू द टेकिंग द डिसिप्लिनरी एक्शन, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट अगर कुछ फाइन भी इम्पोज करना है, दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन अप बाय द स्टेट. Okay, so this is what central government is telling states, that yes, start your process again. Just tell us, okay, whether you have infrastructure with you or not. आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं कोरोना से फाइट करने के लिए. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग देम. ओके, अदर देन दैट you need to understand the government is primarily focusing on the children. Why? Because this section of our population, देखो adult जो हैं वो maximum 80% of our population has been vaccinated by single dose. काफ़ी हद तक हो चुकी है. And there is another statistics which is saying that 44% of our population has been vaccinated with double dose. तो ये चीज़ यहाँ पे available है. But children जो है, this section of population, they are more vulnerable. Okay, they are more vulnerable. That's the point here. So government is also saying that you have to have arrangement for them. अलग से उनके लिए arrangement कीजिए. Okay, so this is what is there in this particular
point. So like government has issued the statement, some details. 14-day travel details will be required, people who are coming to our country. Okay, उनको ऐसा बताना पड़ेगा. They have to upload their negative RT-PCR test report on air suvidha portal. Okay, so this portal is available. So people who are coming to our country, they have to report, they have to submit their report on this particular portal. So this is really important, this is really important, and this RT-PCR test should have been conducted within 72 hours prior to the flight. Okay, so ये सारी कहानी यहाँ पे चल रही है. So we'll move to the next part now. Now government lists farm law repeal on today's house agenda. So finally government is going to repeal these particular laws, but there is a growing demand is to give the legal status to MSP. Okay, कि minimum support price को लेके आपको legal status देना है. Now minimum support price, we know this particular thing is important for the life of farmers. Okay, we have covered this particular part, that MSP assure one thing. MSP आपको क्या चीज देती है? It assures about the income. फार्मर को इनकम की गारंटी हो जाती है, that this is what they are going to get after their harvest. Okay, that's the important point. So it is sort of an insurance है एक तरीके से, ठीक है ना. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है? सी, लुक इनटू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स 2018. ये प्रीलिम्स 2018 का आपका सवाल है, ठीक है. सो वो पूछ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग. नाउ दीज आर सम ऑफ द क्रॉप्स विच आर मेंशन्ड, एंड द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दे अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, सो ये चीज आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखनी है, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग. Now you tell me one thing, like if you don't know about this particular point, so 23 crops are there which are covered by MSP. 23 crops हैं जो MSP के अंडर कवर होती हैं, ठीक है. ये आपको क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए, and it is like it will be difficult if you don't know them. Okay, but somehow we have to make sure, we have to like attempt such type of questions, and they are the tricky ones. Okay, थोड़े difficult होते हैं क्योंकि इनमें से एक भी ऑप्शन आपने इधर उधर गलत किया और हमारा आंसर गलत हो जाएगा. That's the point here. So as per the available solution, the answer is B. ठीक है ना. So B जो है हमारे पास एक आंसर अवेलेबल है. Further you have to check it on your own. You need to know the 23 crops which are there under MSP, वो जिसके अंदर MSP के अंदर जो कवर होती हैं, ठीक है. So this is what we should know about. Now other type of question that was asked in 2019 prelims. Okay, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो 2019 prelims में पूछा है. And again in 2020, if you look into, in 2020 there was a question in mains exam regarding MSP, that how MSP helps farmer. तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है. That's the point here, ठीक है. अब ये क्वेश्चन की डिमांड है, that economic cost of a food grain to the Food Corporation of India is minimum support price, okay, and bonus paid to the farmers plus. So they are looking into the calculation of MSP, कि MSP आपकी कैलकुलेट कैसी होती है, ये सवाल इन्होंने यहाँ पे किया था, ठीक है ना. सो ये जो आपको समझना है, ओके, ये जो आपको समझना है इसके अंदर, दैट लाइक द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे आर द प्रोक्योरमेंट एजेंसी, ये लोग प्रोक्योर करते हैं. फॉर देम इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस. ओके, अब इसके साथ एक और चीज क्या ऐड होती है, प्लस द प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप अ वॉच, दैट यूपीएससी इज आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो वन स्टूडेंट इज आस्किंग, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन कि फार्मर्स जो लीगल गारंटी कह रहे हैं एमएसपी के लिए, थोड़ा हाईलाइट कर दो इस टॉपिक को. ओके, सो दे आर आस्किंग दिस पर्टिकुलर न्यूज दैट लाइक फार्मर्स आर डिमांडिंग लीगल गारंटी फॉर एमएसपी. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, लीगल गारंटी से होगा क्या. देखिए, राइट नाउ गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी बिफोर द सोइंग सीजन. ओके, आपकी क्रॉप जो है उसको सोइंग से पहले एमएसपी अनाउंस होता है. एवरी ईयर इट इज अनाउंस सेपरेटली फॉर खरीफ क्रॉप, सेपरेटली फॉर रबी क्रॉप. ओके, दोनों के लिए अलग अलग जो है साल के टाइम पे ये अनाउंसमेंट होता है. इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिनिमम गारंटी, बट देर इज नो लीगल कंपल्शन ऑन द गवर्नमेंट. प्लीज पे अटेंशन. ओके, अभी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना. एंड गवर्नमेंट में, ओके, गवर्नमेंट में नॉट अनाउंस एमएसपी, ऐसा भी हो सकता है क्या, दैट फॉर अ पर्टिकुलर सीजन द गवर्नमेंट विल नॉट अनाउंस एमएसपी. ओके, अभी गवर्नमेंट एमएसपी क्यों अनाउंस करती है, डेफिनेटली आपको वोटर्स को रिझाना है, यू हैव टू गेट वोट्स, आपको इलेक्शन का टाइम हो जाता है, ठीक है ना.
So this is the present equation that we have. It is just a moral compulsion, not a legal compulsion. Okay, so government doesn't have any legal duty regarding it, that's for sure. Now that's why they are demanding a legal status, so that it will add up the legal burden on the bureaucracy, legal compulsion, legal responsibility on the bureaucracy, on the government, that they have to announce MSP. और वो सिर्फ अनाउंसमेंट की बात नहीं है, प्रोक्योरमेंट कितने टाइम पे होगा, ओके, दोज शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। एमएसपी अनाउंसमेंट सिर्फ एक पार्ट नहीं होगा उस लॉ का, प्रोक्योरमेंट साल में कैसे होना है, कैसे होगा, इन विच मंथ द प्रोक्योरमेंट विल बी डन, एवरीथिंग हैज टू बी टोल्ड इन अनाउंस इन एडवांस। अदरवाइज होता क्या है, कभी कभी देर इज अ डिले बाय द गवर्नमेंट, प्रोक्योरमेंट नहीं करने आए, आपका अनाज है वो सड़ जाएगा, फार्मर अपने पास उसको स्टोर करके नहीं रख सकता। ओके, ये पॉइंट समझना जरूरी है, फार्मर उसको अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा, प्रोक्योरमेंट किस टाइम पे करना है, कैसे होगा, वो सारी चीजें जो है इस लॉ के अंदर मेंशन होंगी। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग, दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। अदर देन दैट देर इज नथिंग मच ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। ओके, सो आगे चलते हैं सीधा एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन दिस एडिटोरियल सेक्शन। ओके, सो दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू व्हाट द ओमनिकॉन वेरिएंट मीन्स फॉर इंडिया। सो लाइक एवरीवन इज now talking about this particular variant and we know the reality। okay, अब देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, second wave, we know that what second wave brought to us, second wave exposed our health system, medical system that we have in this country। okay, no doubt there have been some improvements after that, कुछ ना कुछ improvement यहाँ पे जरूर की गई होगी। okay, but is that arrangement sufficient to deal with this type of crisis? That's the fundamental question we have to address। जो भी आपके पास अरेंजमेंट है, क्या वो इस क्राइसिस को डील कर पाएगा, ये सवाल है जो हमें सोचना होगा। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट। सो राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट स्टिल द डाटा इज नॉट अवेलेबल। ओके, अभी तक डाटा अच्छे से अवेलेबल नहीं है हमारे पास। So that's the point here। so research has to be carried out, data will be available, we will come to know which vaccine will be efficient। okay, which vaccine will be like effective with this particular variant। अभी तक इसको लेके कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज इट इज अ मल्टी म्यूटेशन वेरिएंट, एक साथ बहुत सारी म्यूटेशन यहाँ पे हुई है। देखिए, वायरस अपने आप म्यूटेट होता रहेगा। ओके, यू नीड टू पे अटेंशन टिल द टाइम we don't vaccinate all the people on this earth। okay, जब तक हम सबको वैक्सीनेट नहीं करेंगे, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू एग्जिस्ट, बिकॉज दिस वायरस विल कीप ऑन म्यूटेटिंग। दैट्स द पॉइंट हियर, ये म्यूटेट करता जाएगा, देयर इज नो लिमिट टू इट। एंड द पॉइंट हियर इज दैट you cannot leave out countries, specifically the underdeveloped countries। अगर जो आपके developed countries हैं, if they are thinking that they are safe, okay, if developed nations they are thinking that they are safe, so it is not the case, it is not the case, that's the point here। okay, now there is another important thing that is attached to this omicron variant। okay, so it is more dangerous for people who have weak immune system। जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, उनको ज़्यादा ये नुकसान कर रहा है। सो वी हैव लाइक सम ऑफ द HIV पेशेंट्स। ओके, HIV पेशेंट्स, दे ऑलरेडी हैव द वीक immune system। फॉर देम दिस ओमनिकॉन वेरिएंट इज मोर डेट्रीमेंटल, मोर ज़्यादा खतरनाक है उनके लिए। ओके, सो पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट दैट हाउ इट इज लिंक्ड टू HIV। सो दिस इज दैट लिंक। सो HIV जैसी डिजीज क्या करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, एंड लाइक दिस Omicron variant is dangerous for them, very dangerous for them। okay, so it could pose a threat to progress made in the COVID-19 fight, definitely। now immune system अगर weak की बात करें, it means that it is going to be dangerous for the older people as well। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी डेंजरस हो सकता है ये। ओके, सो दिस इज द पॉइंट हियर। ठीक है ना, ये थोड़ा समझने वाली बात है। सो राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन, इफ यू लुक इनटू इंडिया, सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वी नो दैट वी हैड अ डेवास्टेटिंग सेकंड वेव, आफ्टर दैट थिंग्स आर मच बेटर, योर इकोनॉमी इज मूविंग। ओके, आपकी इकोनॉमी मूव हो रही है, इम्यूनाइजेशन हैज गेन्ड मोमेंटम। वी नो दैट अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ इंडियन adults they have been fully vaccinated, 82% have received at least one dose। so it's a really good achievement। okay, क्योंकि एक वैक्सीन भी अगर लगी हुई है, it means that it is going to provide some sort of protection
कुछ प्रोटेक्शन तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, एटलीस्ट इट विल प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आएगी, दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, so this is the major reason you have to understand, and that's why the scientists they are believing that it is really important to vaccinate all। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा जितनी जल्दी हो सके। ओके, this is what we have to work on, this is the necessity right now। Okay, because even having a single dose of vaccine it is going to offer some sort of protection within our body, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होगी। So right now WHO is saying that this new variant, okay, which has been recently identified in Botswana called the Omicron variant, the early evidences they suggest that it may be responsible for steep rise of cases in Gauteng province of South Africa। Okay, 90% जो सैंपल है वहाँ के वो ओमनिकॉन वेरिएंट से अफेक्टेड हैं। ओके, लाइक इट हैड लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन, ये जो वेरिएंट नया आया है, एंड देयर आर चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन एज वेल। ओके, अब यही मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपको कोविड हुआ है उसके बाद दोबारा भी कोविड आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, एंड दैट्स अ मेजर थ्रेट। ओके, बिकॉज दिस इज मोर ट्रांसमिसिबल। ओके, ट्रांसमिसिबल ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेन्स दैट वी हैड। ओके, एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज दैट इट इज मेजरली लाइक very detrimental for the immunocompromised patient, जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है। सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस पॉइंट, HIV है जिनको या बाकी प्रॉब्लम है उनके लिए ये मेजर प्रॉब्लम लेके आने वाला है। ओके, because in the weakened immune system the virus will continue to multiply and mutate। okay, और ये एक तरीके से हमारे लंग्स को फिर डैमेज करना शुरू कर देता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये सबसे बड़ी चीज है। That's why the only solution that we have is to promote vaccination at a mass scale। Okay, so I have already told you about this point that even a single dose it will reduce the risk, like काफी ज्यादा रिस्क आपका खत्म हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट you need to understand what is the reality right now। so there is current inequity in vaccine distribution। okay, so underdeveloped nations they don't have the resource, इनके पास वैक्सीन नहीं है, ये रियलिटी है यहाँ पे। and rich countries they are going to vaccinate their people, but you need to understand even if like it is for your own protection that you have to help these underdeveloped nations, specifically the African nations। okay, तो अब आपको उनकी हेल्प तो सबसे ज्यादा करनी ही करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ओके, पीपल आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एरिया टू अदर, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि अलग बिल्कुल इसको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज दिस वायरस इज गोइंग टू म्यूटेट फर्दर। अभी तक ऐसी म्यूटेशन नहीं आई है जो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो, भाई आने वाले टाइम पे भी तो म्यूटेशन हो सकती है। ओके, वी हैव सीन मल्टीपल हॉलीवुड मूवीज, ठीक है ना, कि किस तरीके से वायरस कितना खतरनाक तरीके से म्यूटेट करता है। इट कैन हैपन, डेफिनेटली यू कैन नॉट रूल इट आउट। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, फॉर दैट इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इज अर्जेंट। And I am telling you this thing, India can play a really important role। Why? Because India is said to be the pharma of the whole world। Okay, हमें pharma of the world बोलते हैं। And apart from that, you need to understand there is another important step that is required। So you should know in WHO, India and South Africa they have filed a petition for patent waiver कि कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका पेटेंट जो है वो वेव कर दिया जाए फॉर टेम्परेरी टाइम, so that mass production can be carried out। okay, so that mass production can be carried out, and this particular plea is pending। अब WTO के अंदर ये इनको डिसाइड करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। okay, कि what will be the future of this। India has South Africa, they have applied for this patent waiver and they are demanding, and you tell me one thing, if this patent waiver is provided, अब आपका पेटेंट वेवर मिल गया तो सपोज करो इंडिया में कितनी ज्यादा वैक्सीन बनेंगी। ओके, एंड दैट मास प्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट, इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। दैट्स द पॉइंट हियर। सो इंडिया विल बी एबल टू प्रोवाइड दीज वैक्सीन फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए हम ये वैक्सीन प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, एंड स्पेसिफिकली फॉर द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते वैक्सीन। ओके, द वे इंडियन गवर्नमेंट इज रनिंग अ प्रोग्राम फॉर द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डेवलपिंग नेशंस नहीं कर सकते हैं।
So that's why the role of India is important. Okay, so we'll move to the next news now, which is related to COP26 pledge needs a new climate of cooperation. Okay, so this is what they are talking about. So definitely cooperation is required. Okay, specifically cooperation has to be done between developing nations and the developed nations. उनके बीच में मेजर डिफरेंस था. ओके और उन्हीं के बीच में कोऑपरेशन की जरूरत है. देखिए क्यों. सी डेवलपिंग नेशंस दे रिक्वायर टेक्नोलॉजी, दे रिक्वायर मनी. Okay, so if you expect them to do something, so funds will be required and the technology will be required. Okay, technology transfer, and this can be done by the developed nations. So developed nations उनके पास पैसा भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ग्रीन क्लीन टेक्नोलॉजी. सो डेफिनेटली इसीलिए कोऑपरेशन की जरूरत यहाँ पे ज्यादा नजर आती है. ठीक है ना. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर एक्सपेक्टिंग द डेवलप्ड नेशंस टू डू मोर. ओके, टू डू मोर. क्यों? देखिए, अगर ये ज्यादा एफर्ट मारेंगे टू रिड्यूस द टू रिड्यूस द एमिशन, it will provide more space for developing nations to carry on their development. जितना ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटी डेवलपिंग नेशंस को मिलेगी कि वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें. ओके, वेन एवर देर विल बी अ डेवलपमेंट, डेफिनेटली एमिशंस जो हैं वो इंक्रीज होंगे ही होंगे. ओके, डेवलपमेंट होगी तो एमिशन होंगे, पोल्यूशन होगा, इकोनॉमी चलेगी. सो दैट्स द पॉइंट हियर. दैट्स द पॉइंट हियर. ओके, for India's case, there was some positive optimism regarding the deadline 2070, and though the desirable deadline was 2050, लेकिन हमने 2070 अनाउंस किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. We announced net zero target, but that is not an end. Okay, because there are lot of effort which is required at our end also. 2070 भी achieve करना इतना आसान नहीं होगा. ठीक है ना. क्यों? Like if you look into the present reality, so India is the third biggest climate like emission emitter. Okay, तो ये बात आपको समझनी है. और उसके साथ आप समझें like we have not signed global methane pledge. हम ना तो global methane pledge के पार्ट हैं. Okay, to bring down the methane level significantly by 2030. It was signed by many countries and हम लोग इसके बिल्कुल भी पार्ट नहीं हैं. ठीक है ना. So India was not a signatory to bring down the global methane. Okay, so India was also not part of a pledge to deforestation despite hosting the world's largest contiguous mangroves forest, that is Sundarban. Okay, so हमने जो है deforestation को लेके pledge countries were making and we were not part of it. Okay, so in this scenario, how will you achieve this target of 2070? जब आप effort कर रहे हैं, when there is a global effort going on and you are not party to it, how can you like then work on it? That's the point here. Okay, so this is the major point that you have to look into. Other than that, you have to transit yourself to the renewable energy. और कितना अगर हम हो पाए हैं, ठीक है, ये हमें देखना होगा. सो राइट नाउ इंडिया हैज बीन लीडिंग द ग्लोबल मूवमेंट टुवर्ड सोलर पावर. वी हैव अनाउंस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ओके, वी नो दिस पार्ट. मैनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट. बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट बन गए हैं. एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी. ये आपको मालूम होगा. ओके, सो इंडिया हैज साइंड टू द ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा. ओके, along with 35 other nations to promote clean energy and make it more affordable. So ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं. Glasgow breakthrough agenda we have signed. Okay, and we will be working to promote clean energy. So it's a good thing. ये कुछ areas हैं जहाँ पे हमने अपनी तरफ से effort मारा है. You will be noting it down. Okay, this should be part of your notes, that what India has done. Okay, what India has done फॉर क्लाइमेट चेंज. यू शुड बी नोइंग देम इन डिटेल. थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना होता है. ठीक है ना. सो ये सब हमने किया है. नाउ कंपेयर टू चाइना's 2.8%, US 19.8% and some other Eastern European countries 100% transition to renewable energy for power, there is much more room of improvement in India's case. Okay, हम काफी आगे जा चुकते हैं. इन विच पर्टिकुलर फील्ड? आपको मालूम होगा, हमने सुना होगा रूफ टॉप सोलर पावर. ओके, सो राइट नाउ इन इंडिया दिस रूफ टॉप सोलर पावर इज नॉट पिकिंग अप.
बहुत ज़्यादा कुछ खास पिकअप नहीं हुई है। ओके, वी टॉक अबाउट स्मार्ट मीटरिंग। स्मार्ट मीटरिंग की बात करते हैं तो स्मार्ट मीटरिंग अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। इन सब एरियाज में हम जरूर जा सकते हैं। देन लाइक वर्किंग विद यू कैन से द कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस एंड द लैक ऑफ एडिक्वेट अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस। ओके, एक बात है कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है ना। एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट लाइक वी डोंट हैव एडिक्वेट रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस फॉर आवर कंट्री। दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, सो ये हमें कुछ समझना होगा और डेफिनेटली इस चीज को लेके बात आगे बढ़ानी होगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज एनर्जी नीड्स, देयर इज अ टर्म विच इज अवेलेबल दैट वी हैव टू जनरेट एनर्जी मिक्स। एक एनर्जी मिक्स की बात होती है। अब इसमें एनर्जी मिक्स क्या होगा? वी हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज, ओके, एंड वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू द नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पावर लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। तो अगर आपके पास सोलर का इतना अरेंजमेंट नहीं है तो आपको बाकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे फोकस करना होगा। सो न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, वी डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन इट। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। other than that, you have to make sure that there should be available funding which is available। okay, अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं देर इज, हम बोल रहे हैं कि हमें अडेप्टेशन करना होगा। ओके, अडेप्टेशन इतना इजी नहीं होता है, देर इज अ कोस्ट अटैच टू इट, पैसे लगते हैं उसमें। मिटिगेट करना होगा, ठीक है ना। मिटिगेशन इतना इजी नहीं होता है, देर इज अ कोस्ट अटैच टू इट। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट एडिक्वेट फंड्स आर अवेलेबल। ओके, हमारे डिस्पोजेबल पे एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए। दैट्स द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर। So we are facing numerous economic adversities recently। demonetization हुआ, GST हुआ, okay, and then this pandemic। so already government के पास funds नहीं होंगे, there is no doubt about it। okay, so in this scenario from where will you get the fund? So I guess World Bank can play some important role। World Bank can definitely arrange some things। okay, not only for India, for other countries as well। सब जगह जो है ये कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। so this is the area of focus that we should look into। other than that, if you look into the Paris deal talked about one thing, that these developed nations they will be providing $100 billion per year। okay, $100 billion हर साल देंगे ये, ठीक है ना। so this was the promise। now this is the time that developed nations they should start fulfilling their promises। okay, अब उनके promises पूरा करने का टाइम है। and that's why if you look into the Modi's statement, मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने ये बोला कि हमारा एफर्ट उस पर डिपेंड करता है कि बाकी डेवलप्ड नेशंस कितना एफर्ट कर रहे हैं। ओके, सो इफ डेवलप्ड नेशंस आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट, दे शुड नॉट एक्सपेक्ट एफर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। सो मोदी जी वॉज कैटेगोरिकल अबाउट इट। ओके, सो दे ही सेड दैट इफ यू वांट इंडिया टू डू समथिंग देन फर्स्ट फुलफिल योर प्रोमिसेस। ओके, जो आपने प्रॉमिस किए हैं वो सब के सब आपको पूरे करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट आवर आइडिया इज। ओके, ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी होंगी। एंड आवर गवर्नमेंट डेफिनेटली लाइक वेरी सीरियस अबाउट क्लाइमेट चेंज। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू विन ओवर कश्मीरी यूथ। ओके, सो आई वुड लाइक टू टेक यू टू द पास्ट। सो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, ही मेड वन स्टेटमेंट दैट कश्मीर का सोल्यूशन क्या होगा। सो ही प्रोवाइडेड अ रियली important thing। he said that the solution of Kashmir lies in Kashmiriyat, Jamhuriyat and Insaniyat। okay, Kashmiriyat, Jamhuriyat and Insaniyat। so it means that Kashmiri identity will be preserved। Jamhuriyat in the sense method have to be found with the way in a democratic setup। okay, democratic setup के अंदर आपको इलाज ढूंढना होगा। and insaniyat means it will be guided by human values। this is what Atal Bihari Vajpayee has suggested। now along with that, government of India is saying that whatever Kashmiris want, the solution has to come or will be provided under the ambit of Indian constitution only। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आपको जो है समाधान मिलेगा। ओके, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज stating। so in this particular time, like how it is important that we should win over the Kashmiri youth। अब वो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, till the time we are providing a police state in Kashmir, तब तक तो आप बिल्कुल भी किसी के दिल नहीं जीत सकते हो,
ठीक है ना। अब एक पुलिस स्टेट बना हुआ है वहां पे, एवरीवेयर देयर इज आर्मी 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 डिप्लॉयड, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, कभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, कभी इंटरनेट बैन, कभी दिस बैन, कभी दैट बैन, दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। ये सिस्टम जो है वहां पे एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज हाउ इट इज डेंजरस ऑल्सो। पुलिस स्टेट के अंदर तो काम नहीं हो सकता। ओके, सो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? सो दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। So he is saying that a soft touch is required by the government. Soft touch क्या करेंगे हम उसके अंदर? We may have to provide them with more employment opportunities, more development. Okay, this is what is required. Along with that, you have to focus on the governance in that particular state as well. कहीं ना कहीं जहां पे गवर्नेंस पुअर होती है वहां पे प्रॉब्लम आती ही आती है, एंड टेररिज्म वहां पे ब्रीड होता है। ओके, along with that you have to understand one thing. Right now, the state of Jammu and Kashmir, like there's the, you can say the status of state has been taken away and the status of UT has been given. Okay, so our home minister have said that we have to like really restore the state, जो स्टेटस था वापस देना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं गवर्नमेंट उसको लेके कब स्टेप लेती है। नाउ लेट्स लुक इनटू द सम ऑफ द पास्ट थिंग्स हियर, दैट हाउ थिंग्स स्टार्टेड इन कश्मीर। ओके, सो थिंग्स स्टार्टेड इन कश्मीर विद रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान ने ये रेडिकलाइजेशन वहां पे करवाई थी, ठीक है। डेफिनेटली पीपल इन पाकिस्तान राइट नाउ दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड। ओके, और कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम वाज स्टार्टेड इन 1990s। ओके, 89 के अंदर मेजरली बोलते हैं स्टार्ट हुआ, लेकिन 90s का जो टाइम था वो मेजर प्रॉब्लम वाला था कश्मीर के लिए। ओके, सो एज effort was made by Pakistan to divide Kashmiris, okay, and rest of India, that disconnect them, create violence, ये सारी चीजें जो हैं वहां पे हुई। okay, so hundreds of tanzeems were created in Pakistan to fight in Afghanistan. Some of these were also deployed in Jammu and Kashmir. तो वहां से ट्रेन टेररिस्ट जो है यहाँ पे आते थे, एंड दिस इज हाउ इट फेड, एंड राइट नाउ ऑल्सो इट इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म विच इज अफेक्टिंग अस। ओके, मिलिटेंसी इंक्रीज हुई, प्रॉब्लम बढ़ती गई, एंड इन कश्मीर देयर वाज अ गवर्नर्स रूल। ओके, मतलब डेमोक्रेसी जो थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो घर पे बिठा दी गई थी, एंड राइट नाउ सेम सिचुएशन इज देयर कहीं ना कहीं। ओके, दोबारा इन द कमिंग टाइम इलेक्शंस वर ऑर्गेनाइज्ड, एंड देयर वर द पीपल वर सेइंग दैट दोज इलेक्शंस वर रिग्ड। 80s के अंदर इलेक्शंस जो हुए वो रिग्ड इलेक्शंस होते थे। ओके, वोटिंग परसेंटेज वाज really very less, बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज होता था। so this was sort of an arrangement which was there in Kashmir. army was deployed, multiple problems were there, ठीक है ना। so right now Kashmiri youth they are protesters, वही protest करते हैं against like multiple reasons। okay, we know this particular point। so we also like we were criticized to use pellet guns, कहीं ना कहीं वो भी हमने एक तरीके से गलती की, because there were people who lost their life because of that, some of them lost their eyes। okay, then there was a Burhan Wani incident। so this sort of event should be known to us कि इस तरीके से जो है वहां पे इवेंट्स हुए हैं। Right now there has been a suggestion that terrorist must be lynched is not a good idea। क्यों भाई, ये आइडिया क्यों नहीं है? so it is just like spreading a vigilante approach। okay, and in a democratic country जनता जो है वो डिसाइड नहीं करती, जुडिशरी डिसाइड करती है सजा क्या है। that's the point here। further there is a suggestion that there should be de-radicalization camps for youth। the youth who has been radicalized, for them there should be de-radicalization camp, ऐसा suggestion दिया गया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, वी आर ऑलरेडी कैरिंग आउट मल्टीपल यू कैन से एफर्ट्स। वन इज ऑपरेशन सद्भावना, ओके, अंडर विच वी आर असिस्टिंग द यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सब हमारे यहाँ पे हो रहा है। सो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज्ड भारत दर्शन टूर टू दिल्ली एंड आगरा फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, सो एट मल्टीपल लेवल द एफर्ट आर मेड, बहुत जगहों पे एफर्ट जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। Other thing is related to protecting the Kashmiris। so Kashmiri children in schools and colleges, they are often mistreated when any misadventure take place in Jammu and Kashmir। ये चीज बिल्कुल रुकनी चाहिए। so जो कश्मीरी यूथ बाकी इंडिया में रह रहे हैं, हमें उनको कभी भी मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। that's the really important thing। okay, incidents of violence against minorities including Muslims in North India have also worsened their problem।
वन कैन नॉट लव कश्मीरी मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हेट देम एल्सवेयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो यू हैव टू शो सम लव टू देम, ओके। ये चीज आपके बिल्कुल बिल्कुल समझनी है। सो दिस इज द टाइम दैट कश्मीरी यूथ दे शुड फील सेफ इन इंडिया, बिल्कुल सेफ उनको लगना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके। देयर हैव टू बी सम प्रोफेशनल अप्रोच इन आवर एफर्ट, बिल्कुल प्रोफेशनली हमें उनको हेल्प आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज देयर फॉर अस, ओके। सो दे आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट टच, वो चीज हमें करनी है। सो इंडिया हैज टर्न इनटू अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स नॉट सीकर्स, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, ओके। तो ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेके आओ, नौकरियां पैदा करो, अच्छी चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। सो good thing he is pointing out. So let's see what else is there in this particular page. There is nothing much, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, okay. So this is what we had here. इसके अलावा on this particular page as well there is nothing much, okay. So yesterday we know that Chief Justice of India, he criticized the lawmakers that in India lawmakers they are not debating things in parliament, okay, कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं कर रहे हैं हमारे लॉ मेकर्स, उस वजह से कानून जो है वो पुअर क्वालिटी के बन रहे हैं, ठीक है ना। सो नो डिबेट्स आर टेकिंग प्लेस विदाउट डिबेटिंग, like they are passing the law, and because of that the poor quality of law is there, okay. आपका लॉ पुअर क्वालिटी का होता है, दिस इज व्हाट आवर चीफ जस्टिस इज टॉकिंग अबाउट, एंड ही इज सीरियस अबाउट इट। यू कैन डेफिनेटली यूज हिज वर्ड्स इन योर आंसर, आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। इफ देर इज एनी क्वेश्चन इन योर जीएस पेपर 2, ओके, रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और पुअर वर्किंग ऑफ योर पार्लियामेंट, तो वहां पे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट, उनका नाम यूज कर सकते हो कि ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है ना। इट विल एड सम वेट टू योर आंसर, ओके, वेट, आपका आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नाउ इंडिया बांग्लादेश टू डीपन द टाइज एज पार्टनर्स, so there are some things that are pointing out, okay. So we are talking about finalizing the comprehensive economic partnership agreement to deepen the trade and economic ties, okay, as partners rather than as competitors, okay. So हम partner बनने वाले हैं बांग्लादेश के। it won't be easy, you need to understand Bangladesh is doing something really good, okay, और हमें बांग्लादेश से कुछ सीखना चाहिए रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। बांग्लादेश के पास अपनी एक एडवांटेज है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या एडवांटेज है? बांग्लादेश हैज चीपर लेबर, हमसे भी सस्ती लेबर है वहां पे, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक इनटू, एंड डेफिनेटली वी कैन लर्न फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इट्स अ गुड थिंग वी आर वर्किंग विद देम as a partner, okay. So other than that there is nothing much on this particular page. So Omnicon puts spotlight back on the safety, बिल्कुल चीजें अब लोग सीरियस हो जाएंगे, मास्क लगा के घूमेंगे, अदरवाइज दे विल बी चलान, उनके ऊपर फाइन लगेगा, ओके। सो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। So on the international page we have few things to look into. Netherlands detects 13 Omnicron cases, okay. So like multiple countries this is spreading. This is just the tip of the iceberg. There are a lot of people who have already been infected by this. बहुत जल्दी ये वायरस फैलता है, ये समझें आप, ठीक है ना। सो मास्क लगाना हमारे लिए ज़रूरी है, स्पेसिफिकली फॉर कंट्री लाइक इंडिया। वी हैव द लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी इन द वर्ल्ड, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा डेंसिटी है हमारे यहाँ लोगों की, एंड स्पेसिफिकली इन आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ओके। सो बहुत चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। सो अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। नाउ प्रोटेस्ट इरप्ट इन ऑस्ट्रिया ओवर द कंपल्सरी वैक्सीनेशन। देखो ये सबसे बड़ी सरदर्दी है गवर्नमेंट की, बिकॉज देर आर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज विच आर रिलक्टेंट फॉर वैक्सीनेशन, वो अभी भी रिलक्टेंट हैं वैक्सीनेशन को लेके, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक इनटू, इसको जरूर इंप्रूव करने की जरूरत है, एंड डेफिनेटली दिस कांट बी डन विदाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी। इंडिया के अंदर भी ऐसा होगा, लाइक बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कंसिडरेशन एंड ऑल, पीपल आर रिलक्टेंट टू गो फॉर वैक्सीनेशन। अब ऐसी सिचुएशन में उनको सुधारना, उनको परसुएड करना, डेफिनेटली लाइक इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो गवर्नमेंट हैव टू डू समथिंग, उनको जरूर सरकार को एफर्ट करना पड़ेगा, ओके। So this is what is there. Now Iran nuclear talks set to resume after 5 months, okay. So it's a good thing. Again there are chances that joint comprehensive plan of action will be revived. अब आपको पूरी कहानी मालूम होनी चाहिए। देखिए, ईरान was building a nuclear reactor, ठीक है जी, ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था, and because of to stop Iran from building a nuclear reactor, some sanctions were brought in on Iran. ईरान के ऊपर लगा दिए sanction, okay. Means other countries were not doing business with Iran. That was the situation. Now under the Obama administration, okay,
वन एफर्ट वॉज मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने क्या कहा कि वी विल रिमूव द सैंक्शन, हम सैंक्शन जो है वो रिमूव कर देंगे। ओके, यू शुड स्टॉप योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोक देगा। ओके, दिस अरेंजमेंट वॉज टर्म्ड एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस पूरे साइन को, इस बात को, इस एग्रीमेंट का जो नाम दिया गया वो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। So it was not just US, other countries were also there, Russia, like it was P+1, okay, Germany, European Union, वो सब भी थे यहाँ पे, ठीक है ना। Now Donald Trump came to power, okay, we know that after Obama Trump came to power. When Trump came to power, he unilaterally, खुद ब खुद, okay, unilaterally he took US out of the deal। अब यूएस को डील से बाहर कर दिया। ओके, दैट सैंक्शंस विल नॉट बी रिमूव्ड, ईरान चाहे कुछ मर्जी कर ले, सैंक्शन रिमूव नहीं होंगे। ओके, सो दिस वाज द थिंग, एंड आफ्टर दैट द होल प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ईरान टू अक्वायर अ न्यूक्लियर वेपन वाज स्टॉप्ड। पूरा पूरा एफर्ट जो है वो जीरो हो गया। राइट नाउ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज बैक, आज की डेट में बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन वापस आ चुका है। सो अगेन देर आर चांसेस टू रिवाइव इट, इसीलिए बात हो रही है कि इसको हम रिवाइव करेंगे, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को। ओके, ईरान को परसुएड करेंगे दैट दे शुड गिव अवे देयर लाइक आइडिया ऑफ गेटिंग न्यूक्लियराइज्ड। जो न्यूक्लियर वेपन पोजेशन का भूत चढ़ा हुआ है ईरान को, वो भूत जो है वो ईरान छोड़ दे। ओके, सो ये बेसिक आइडिया है जो इसके पीछे चल रहा है। So this is what is there for us in today's newspaper. Now let's look into one of the question, past years के question को देखते हैं। So this is again a 2017 questions, okay, mains का question है ये, which is talking about discipline generally implies following the order and subordination. However, it may be counterproductive for the organization. Discuss. Okay. अब देखिए ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन किस लिए होता है कि आपको ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे अपने सीनियर के। ओके, एज अ सबऑर्डिनेट आप नीचे हो उनसे पोस्ट के अंदर, ठीक है ना। यू नो दिस पर्टिकुलर पार्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव हायरार्की। ओके, आपके यहाँ पे एक हायरार्की चलती है एंड यू हैव टू फॉलो दैट हायरार्की। दैट्स द पॉइंट हियर दैट वी हैव। ओके, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव हियर। नाउ इट इज सेइंग वन थिंग, इट इज सेइंग दैट sometimes your senior might ask you to do something wrong। okay, आपका सीनियर आपको कुछ गलत करने के लिए भी तो कह सकता है। दैट्स द पॉइंट हियर। तो क्या आप वैसा करोगे? क्या आप डिसिप्लिन के नाम पे वट एवर ऑर्डर इज गिवन टू यू, विल यू फॉलो दैट? ओके, इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन क्या जो भी आपको कहा जाएगा वो आप करोगे, या यू विल हैव यू विल बी यूजिंग योर ओन विजडम एज वेल? That's the point here. Okay, so you have to use your own wisdom as well, you have to use your own mental ability, emotional intelligence, आपकी खुद की ability है जो आपको सोचना होगा, समझना होगा। That's the point here. See, discipline in an organization is required। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी indisciplined होना चाहिए। Okay, discipline is also required in an organization to ensure productivity, efficiency in your work। It encourages harmony and cooperation among employees। okay, you had a system, एक तरीके से सिस्टम फॉलो होता है। it creates good atmosphere। okay, अच्छा एटमोस्फेयर भी बनता है। but you need to understand there are chances when over discipline can be there। कभी कभी क्या होता है कि ओवर डिसिप्लिन अगर हो जाए, इट एड्स रेस्ट्रिक्शंस, इससे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। ओके, इट एड्स फियर, डर बढ़ जाता है। यू टेल मी वन थिंग, इफ यू आर वर्किंग विद रिस्ट्रिक्शन एंड फियर, विल यू एवर बी एबल टू प्रोवाइड इनोवेशन? क्या आप कभी भी कोई इनोवेशन प्रोवाइड कर पाओगे? भाई इनोवेशन प्रोवाइड करने के लिए तो खुले दिमाग से काम करना होता है ना। सो यू टेल मी वन थिंग, इन योर ब्यूरोक्रेसी जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी इनोवेटिव। मोदी जी क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स को? भाई इनोवेटिव बनो, नई सोच लेके आओ, न्यू आइडियाज लेके आओ। ओके, दिस इज द पॉइंट हेयर। नए आइडिया, नई सोच ये लेके आए, ब्यूरोक्रेसी में काम करें। बट the point here is that in the environment of fear and restriction, is it possible to have this particular thought process? क्या आप खुल के सोच पाओगे? आप खुद ब खुद सोचो अपने आप से। That's the point they are making. Okay, so management of discipline is really very important because you cannot go with under discipline। आप under discipline में भी नहीं काम कर सकते।
उसके अंदर सब लोग अपनी मन मर्जी करेंगे. ओवर डिसिप्लिन विल इम्पैक्ट द इनोवेशन. ओके, वो वैसे ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. सो दिस इज द पॉइंट हियर. This is the point here. Okay, so using the negative discipline to punish employees for poor performance, it is not effective. इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा ये. दैट्स वन पिक्चर हियर. ओके, ये एक पार्ट है जो आपको समझना है. भाई हर किसी को डरा रहे हो आप, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. It is not going to work. Okay, so while discipline is important in ensuring order and subordination, a fine balance needs to be followed so that it does not become counterproductive. किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो. अ फाइन बैलेंस हैव टू बी ब्रॉट इन. दैट्स द पॉइंट हियर. So this is the important point. So to make discipline possible, as a senior, आप सीनियर हो तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो. आप रैंडम क्रिटिसिज्म मत करो कि ईगो के नाम पे क्रिटिसिज्म कर रहे हो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड देयर इज अ वे टू एक्सप्लेन. ओके, अगर आप अपने सबऑर्डिनेट की कमियां बताना चाहते हो, सो फॉर दैट देयर इज अ वे, एक तरीका होता है बताने का. ठीक है ना. So punishment is not the way. Punishment is not the solution. You have to tell the person that okay, this is the problem. This is what we are expecting from you. हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करो. एंड पीपल डेफिनेटली दे इम्प्रूव देमसेल्व्स. ओके, जनता खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाती है. So this is the important thing which is highlighted in this particular part, that discipline is required, over discipline is not, and under discipline is not. Okay, एक फाइन बैलेंस होता है जो हमें मेंटेन करना होता है. एंड डिसिप्लिन के नाम पे ये नहीं होगा that you will be listening or you will be like accepting the wrong orders, okay, to do wrong things. So wrong orders to do wrong things will not be accepted at all. So this is what is there for us in today's newspaper. So that's it for the day then. Thank you very much.